When he came back, also a lot of people were, laughing कि यार ये IIT दिल्ली के बाद बस IIT के बाद अगरबत्ती कौन बेचता है? हाँ Because अगरबत्ती business, Siddharth, with all due respect, when I joined for good, I will say until we took Dhoni, it was not recognized only. Of course, By near yeah. and dear ones, कि यार अच्छा ये भी तो business होता है, अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा अगरबत्ती, अच्छा when they used to see factories, like इतनी बड़ी factory उस time पे आज से 10 साल 12 साल पहले. Hello and welcome to the Indian Dream Podcast. On this podcast, we learn what it takes to build a profitable business from entrepreneurs who have done just that. On today's episode, we're going to be talking to Ankit Agarwal, who has built an 800 crore annual revenue agarbatti business. He's the second generation leading the family business of Mysore Deep Perfumery House, popularly known for their brand Z Black Agarbattis. Z Black is endorsed by the likes of Mahendra Singh Dhoni and Ritik Roshan. We're going to talk to him about how he has built this large scale manufacturing business and also a brand in the agarbatti market. Before we talk about the business, let's zoom out and try and understand the agarbatti or the incense sticks market. The incense sticks market is a 10 to 12,000 crore annual revenue business in India, out of which 1,000 crores is exported out of India every year to about 150 countries. There are more than 1,000 manufacturers of agarbattis in India, most of which are small cottage industry players, and this market is largely unorganized. There are three main raw materials that go into making an agarbatti. The stick, which is made out of bamboo. There's a powder that actually binds the agarbatti together and burns, which is called the jigat powder, and also the fragrance that gives the agarbatti the beautiful smell. Prior to 2019, the bamboo stick and the jigat powder were primarily being imported from Vietnam and China. It's not like we could not produce those raw materials in India. It is just that the bamboo stick and the jigat powder were so regulated and required so many licenses that it was 5x more expensive to procure from India than to import from Vietnam and China. However, in August 2019, everything changed. The government of India decided to put the bamboo stick and the jigat powder import on restricted list. Before this, anybody could import these raw materials from Vietnam and China. After being put on the restricted list, you needed special permissions from the government to import these things. For all practical purposes, the government of India decided to ban the import of these raw materials. Along with this, they also deregulated the bamboo stick and the jigat powder industry, making it easier for people to procure from India, and therefore the cost of these raw materials decreased. This was a huge shock to the industry in 2019. However, this also started our journey to become self-reliant for the agarbatti market, and since then, we have largely been manufacturing these raw materials and producing the finished goods within India. This was one of the things that the Indian government did in the Atmanirbhar Bharat scheme. In fact, Mysore Deep Perfumery House has been vertically integrated where they make their raw materials in-house. They have 10 lakh square feet of manufacturing space in Indore. They employ about 3,500 people, out of which 80% are women from rural background. In fact, they have built the world's largest agarbatti manufacturing plant in Indore. Not Indore's largest, not India's largest. This is the world's largest agarbatti manufacturing plant. In this episode, we talk to Ankit about three core things that has helped Z Black become the top 5 brand in India while competing with brands like ITC's Mangaldeep. Here are the three things that we talk about. The distribution network, which is 3,500 distributors now, about 7.5 lakh retailers, and this has been the core reason they've been able to expand the business and grow it so big. Then we talk about what it takes to build and run a large-scale manufacturing business. Within this, we talk about the relationships with vendors, the investment in technology, and the importance of investment in research and development. And the third thing that we talk about is celebrity marketing. As a bootstrapped business, as a bootstrapped family business, getting Mahendra Singh Dhoni and Ritik Roshan to endorse the brand is a big deal and also a big expense. We talked to him about how they rationalize this and what has been the impact of Mahendra Singh Dhoni and Ritik Roshan coming on board to actually endorse the Z Black brand. This is a fascinating episode where we go deep into Ankit's 17-year journey of building this large business. Before we jump onto the episode, I have a request for you. At The Indian Dream, we've been creating content to help you build a profitable business for the last 2.5 years. We've hosted 100 entrepreneurs. We've recorded more than 150 episodes on what it takes to build a profitable business. Earlier, everything that we were doing was primarily for Spotify, Apple Podcasts, and other podcasting platforms. However, from here on, we are going to be a YouTube first channel where we're going to be creating content on YouTube to help you build a profitable business. If you're an entrepreneur or somebody who wants to start their own business, we're going to be creating content just for you.
So subscribe to our channel and comment to tell us what kind of episodes do you want to see from us. If you have founders that you want us to host, if you have topics that you want us to research and cover, please let us know. Without further ado, let's jump on to the episode. अंकित, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए. आपकी जर्नी ऑफ बिल्डिंग जेड ब्लैक, बिल्डिंग मैसूर डीप परफ्यूमरी हाउस. इट्स अ नेम दैट्स पैन इंडिया, ग्लोबल नाउ, 41 कंट्रीज. बट इसकी शुरुआत होती है 1992 में. योर फादर स्टार्टेड दिस बिजनेस. क्या थीसिस था? क्यों अगरबत्ती का बिजनेस? उस टाइम भी बहुत अनऑर्गेनाइज था, अभी भी बहुत अनऑर्गेनाइज है. क्या थीसिस था उस टाइम पे स्टार्ट करने का? तो मेरे पापा एक कपड़े की दुकान पे काम करते थे, कहाँ कपड़ा बाजार है इंदौर, बड़ा फेमस. वहाँ उनके अंकल के कपड़े की दुकान पे काम करते थे. और बट उनको हमेशा से था दैट ही वांटेड टू बी अ बिजनेसमैन, ही वांटेड टू डू हिज ओन बिजनेस, प्राइमरीली मैन्युफैक्चरिंग ओनली. तो उन्होंने 85 से लेके मेरे बर्थ के 6 महीने बाद वो जॉब छोड़ी. फिर 85 से लेके 91 तक उन्होंने 7-8 अलग बिजनेस ट्राई किए. एंड अनफॉर्चुनेटली ही फेल्ड इन ऑल द बिजनेसेस. एंड दैट्स व्हेन माय ग्रैंडमदर केम इन द पिक्चर. वो बोले कि आप मेरे पापा को बोले कि बेटा, व्हाई are you trying this manufacturing, do trading of agarbattis which your uncles do? His maternal uncles were trading agarbattis. Still तो बोले वो करो ना, क्यों इधर मैन्युफैक्चरिंग में बैंगलोर जाओ, अच्छी अगरबत्ती की एजेंसी लेके आओ. पापा बोले कि वेट फॉर सम टाइम, बैंगलोर वाले इधर आएंगे अगरबत्ती के एजेंसी लेने. एंड दैट वाज द थिंग ही हैड. एंड ही स्टार्टेड अगरबत्ती बिजनेस ऐसे गराज में. आई थिंक नॉट पे 200-300 स्क्वायर फीट का वो गराज होगा हार्डली, बस. तो 200 स्क्वायर फीट का उसमें उन्होंने अगरबत्ती की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया. थी ही टुक इट एज अ चैलेंज दैट डे व्हेन ही वाज समहाउ सेड दैट ही विल नॉट बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. वो जो गराज से लेके आज धोनी एंड ऋतिक रोशन एडवर्टाइजिंग द ब्रांड, दैट्स द जर्नी दैट आई वांट टू सॉर्ट ऑफ कैप्चर इन द नेक्स्ट few minutes that we talk about. फास्ट फॉरवर्ड करते हैं थोड़ा सा. I think 1992 to 2003, obviously a lot of capital would have also been invested in the 5-7 failed businesses. तो ऐसा नहीं है कि पूरा पैसा इसमें डाल के आप बढ़ा सकते. 85 to 92. 85 to 92 में, right? So 7 businesses that are उस पे capital obviously lose हुई होगी. But growing the business to a certain point, and then 2003 when your entire factory was gutted down because of a fire. Yes. How do you even come back from that, right? I mean, 7 साल 8 साल की मेहनत, 11 साल की मेहनत actually उस time पे, all of it burned down to the ground. How do you come back from that? That's a famous saying, if health is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. And if courage is lost, everything is lost. I think that's the main thing. Fortunately, we didn't lose the courage. My father didn't lose his courage after the big mishap which happened. And I joined in business after that. We both started again from scratch. और बहुत मेहनत की, honesty रखी, सब चीज़ से honesty रखी, whether it was our customer or supplier, our own employees, it was a product. For everyone, we were very loyal. So वो बहुत important चीज़ थी कि honesty हमने रखी और hard work किया, dedication, मतलब full time लगे रहे. It was like eat अगरबत्ती, sleep अगरबत्ती, drink अगरबत्ती, something like that. So we did everything. And just went by the book, 1 + 1 = 2, tried nothing very fancy, believed in our guts, believed in what we learned from others, believed in our travel करके अलग अलग लोगों से मिले, उनसे हम लोग को बहुत insights मिले, and just believed in that and just implemented in the business. For you, Z Black, I think that put you on the map. Yeah. That brand name put you on the map, right? And this is a brand name started in 2001. Now, when somebody thinks about अगरबत्तीज, generally आप जो मार्केट में देखते हो, एक तो हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस पे आप टारगेट कर रहे हो, तो ब्रांड नेम्स भी आपकी हिंदी है. And then a lot more of gods and religion being imprinted on the packaging itself. What was the thought process of an English-speaking, English brand name? And yeah, the thought process is I'm very curious about that. So Z Black started much before 2001, and I think in the year 99-2000 it got super hit. It got noticed across India. That's the time when everyone noticed that okay, there is a product called Z Black. So the idea of Z Black is majorly used by Hindus, major और भी रिलीजन के लोग यूज़ करते हैं, बट मेजरली यूज्ड बाय हिंदूज. और एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी अगरबत्ती को बेचने की, आप भगवान का नाम, भगवान का फोटो डाल दो और आपकी अगरबत्ती बिक जाएगी. बट माई फादर थॉट कि इट वुड बी डिसरिस्पेक्ट कि हम लोग पैकेट यूज़ करने के बाद उसको फेंक देते हैं, एंड देन वो भगवान का फोटो. बस फ्रॉम डे वन ही वॉज वेरी क्लियर कि भगवान का नाम तो मैं डालने नहीं वाला हूँ. और मैं वैसे एंड द पैकिंग विच यूज टू कम, उस टाइम पे बड़े ब्राइट कलर्स आते थे. तो पापा वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट. सो इंग्लिश नाम निकाला कहीं से, बोला ये Z Black यूनिक नाम है, डिफरेंट है, अलग है, और थोड़ा एक सिंपल एलिगेंट क्लासी पैकेट बनाया और उसमें बहुत अच्छी फ्रेगरेंस डाली. इट वॉज इंस्पायर्ड बाय ड्रकर नॉयर, तो उसको वैसी फ्रेगरेंस डाली. एंड
He gave it a very good price. So it was everything. The product had everything. It was different. It was it was a different leak. It came in a very nice, elegant packing, amazing fragrance. The price point was also good, and everyone took it hands on. एकदम से वो click हो गया और famous हो गया that product called Z Black अगरबत्ती. Interesting. ये पूरी गेम दो अगरबत्ती का बिजनेस इफ आई थिंक अबाउट इट टू थिंग्स राइट वन इज द परफ्यूमरी द फ्रेग्रेंस बेसिकली डिसाइड्स इफ आई वांट टू बाय द अगरबत्ती और नॉट एंड सेकंड ये जिस तरीके से बिक रहा है डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट राइट अगर आपको पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नहीं सेट किया आई वांट टू गो डीपर ऑन बोथ दोस टॉपिक्स perfumery where did the R&D did that taste for perfumery came about is that something that your father was natural at instinctively वो समझ में आ गया कि उसके पीछे बहुत मेहनत लगाई थी. So I'll say distribution तो ठीक है perfumery. The first is the packaging which comes. आप जब कोई शॉप में जाओगे सबसे पहले आप पैकेट देखोगे उसके बाद उसको सूंघोगे. Correct. तो फर्स्ट इफ यू लाइक देन ओनली यू स्मेल एंड था इंडिया में थोड़ा सा बिलीव है कि हम अगर भगवान को अगरबत्ती लगा रहे तो हम उसको सूंघेंगे नहीं. आप पैकिंग देखते हो आपको अच्छी लगती है शॉपकीपर आपको बोलता है अच्छा प्रोडक्ट है तो ही आप घर लेके आते हो इसको और फिर आप लगाते हो फ्रेग्रेंस अच्छी है देन यू विल रिपीट देन यू विल बाय इट अगेन. So I think first point is the packaging, the design. It's very, very important, which we focus on. Then obviously the perfumery part of it because the USP is perfumery. If you even कितनी अच्छी पैकिंग में बना लो अगर घर लाके आपको खुशबू अच्छी नहीं लगी, you're not going to buy the अगरबत्ती. तो फ्रेग्रेंस एक पार्ट है दैट वन ऑफ द फ्यू कंपनीज इन इंडिया जो 100% अपने फ्रेग्रेंसेस खुद बनाते हैं. तो हम लोग अपने फ्रेग्रेंसेस खुद बनाते हैं. डिस्पाइट आज तो ठीक है यू आर वेरी बिग यू कैन अफोर्ड टू मेक द फ्रेग्रेंसेस बट when we were small when my father started तो इनिशियली उन्होंने फ्रेग्रेंसेस बाहर से खरीदे बट वेरी सून ही रियलाइज दैट इफ ही वांट्स टू मेक अ डिफरेंस इफ ही वांट्स टू गिव कस्टमर गुड प्रोडक्ट एट अ गुड प्राइस सो ही हैज़ टू मेक हिज ओन फ्रेग्रेंसेस. तो उन्होंने उसमें रिसर्च चालू किया उसमें ही स्टार्टेड टू कॉन्टैक्ट उस समय के जो बड़े परफ्यूमर्स थे जो कंसल्टेंट्स थे ही गॉट इन टच विद देम एंड बहुत मेहनत की उन्होंने बहुत ट्रैवल किया और इस तरीके से उन्होंने सीखा कि कैसे फ्रेग्रेंस बनाना है. तो विद द हेल्प ऑफ कंसल्टेंट्स he started making fragrances that today we make 100% of our own fragrances. Yeah, I think this is a very important lesson for manufacturers in general. India में जो manufacturing होती है, the investment in R&D is generally very less, especially अगर आप family businesses, mid-sized businesses का देखोगे, तो उसके कारण we've lost the manufacturing battle to China, right? Because we've never invested in R&D. और जब तक R&D invest नहीं करोगे, तब तक long term you can't really build a moat in the business, as they say, right? The barriers of entry इतनी small है कि कोई भी घुस के वो same चीज़ आपने जहाँ से लिए वो मैन्युफैक्चर. द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ इट डिस्ट्रीब्यूशन वी वर टॉकिंग अर्लियर 2011-12 इज व्हेन यू हिट द एक्सेलरेटर इन टर्म्स ऑफ रिटेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स. आज 7.5 लाख रिटेलर्स हैं 3,500 डिस्ट्रीब्यूटर्स. यू आर नाउ एक्सपोर्टिंग थ्रू 41 डिफरेंट कंट्रीज. बट व्हाट हैपेंड इन 2011-12 फॉर यू टू रियलाइज कि ओके दिस इज द टाइम टू नाउ पुश द पेडल go for glory basically? Okay, so as you told that I took the full control in 2005 and मैंने I started to learn, I started to travel, गलतियाँ भी करी, नुकसान भी किया, सब किया. And then I realized that this business is scalable, but I need a internal hand, a family, someone from family. And my younger brother was in IIT Delhi that time, Anshul. And my father was forcing me to expand the business. And I said that कि यार मैं अकेला हूँ और जितना मुझे संभाल पाएगा उतना ही मैं कर पाऊँगा. But yes, definitely if you want to increase business, I need another hand. And Papa was not willing to call Anshul, but he's like he's in his comfort zone, he's in Delhi, B.Tech किया है तो कुछ करेगा, IT में कुछ करेगा, बाहर जाएगा, abroad जाएगा and all that. But he was after me and then I spoke to Anshul one day. I said that Papa is after me and I don't think I can take this forward now. I need you. So he was very happy. He said, okay, I'll come back. And when he came back also a lot of people were, laughing कि यार IIT दिल्ली के बाद IIT के बाद अगरबत्ती कौन बेचता है? हाँ. Because अगरबत्ती business, Siddharth, with all due respect, when I joined for good, I will say until we took Dhoni, it was not recognized only. Of course. By near and dear. अच्छा ये भी तो business होता है. अच्छा ऐसा भी होता है. अच्छा अगरबत्ती. अच्छा when they used to see factory, इतनी बड़ी factory उस टाइम पे आज से 10 साल 12 साल पहले. अच्छा इतनी बड़ी factory थी अगरबत्ती. हमको तो लगता था ऐसे छोटे से कमरे में बनाते होंगे आप लोग. So Anshul, I'll say, heads off to my younger brother. I'll say कि he being in IIT Delhi, being in Gurgaon, after Delhi he was doing a startup in Gurgaon in a comfort zone. He said, okay, I'll come back to Indore. Just 8 phone call. That's it. I'll come to Indore and we'll do. So he came in 2010 somewhere and he joined in 2011. And that's as soon as he joined and उसको 6-8 महीने because he's a smart guy, he's an intelligent guy, he was in IIT.
बहुत जल्दी उसने ग्रास्प किया और 2011-12 में जैसे ही मुझे लगा कि नाउ ही कैन टेक केयर ऑफ द थिंग्स हियर, आई सेड नाउ इट्स टाइम टू एक्सपैंड, it's time to fly. So 2012 we opened 9 new markets, 9 new offices in 1 year, which is still I think the highest till now कि एक साल में हमने 9 नए ऑफिस खोल दिए. So I traveled crazily. I went from place to place, opening offices, recruiting people, expanding the territory, distribution बनाना. Because I feel कि अगर आपको कहीं बेचना है तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा. अब जब मर्सिडीज़ का शोरूम इंदौर में नहीं था तो लिमिटेड मर्सिडीज़ थी. जब खुल गया तो समझो फॉर एग्जांपल किसी का बजट 20 लाख का है और एक मर्सिडीज़ कोई इस समय से 28 लाख की आ रही, तो प्रॉब्ली ही एक्सटेंड अ बिट कि चलो यार शोरूम एक बार चल के देख तो लें. एंड वंस यू एंटर द मर्सिडीज शोरूम में लाइक 20 का है, कुछ करते हैं करके 28, so it will happen. You go to closer to the customer, the sales is going to happen. That's what we believed. So we went from places to places. We opened office like say Ambala, Zirakpur. Even 2011, I opened office in Bangalore, which is like the Agarbatti hub. 2013 December, we opened office in Chennai, where the sale was 0 rupees when we opened. तो 0 तो किसी को बोले यार पागल है, 1 रुपए की सेल नहीं तो ऑफिस को खोल रहे हैं वहाँ पे. मैं ऑफिस आई हैव टू ओपन द ऑफिस एंड देन आई हैव टू डू. तो वो ब्रेव डिसीजन लिए उस समय कि ऑफिस खोले, एक्सपैंड किया. लैंग्वेज नहीं पता थी, लोग नहीं पता थे. बट साउथ इंडिया इज अ वेरी टफ मार्केट. साउथ इंडिया, बैंगलोर, कर्नाटका, बैंगलोर, मैसूर और 90% उस टाइम पे तो शुरुआत में तो 90% ऑफ द अगरबत्तीज यूज्ड टू कम फ्रॉम देयर. आज भी काफी इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट. और फिर जब आप प्राइस एंगल डालोगे, लॉजिस्टिक्स पास में है, सब कुछ पास में, सो इट ऑल द मोर डिफिकल्ट टू कम्पीट. फैमिली बिजनेस, बूटस्ट्रैप, इक्विटी इन्वेस्टमेंट आपने कहीं नहीं लिया, राइट? बट एज सून एज यू टॉकिंग अबाउट 9 डिफरेंट मार्केट्स, अलग अलग जाके खोलना, बहुत मैन्युफैक्चरर्स ड्रीम ऑफ दैट, कंज्यूमर ब्रांड बनानी है, करना पड़ेगा. बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वर्किंग कैपिटल, बिकॉज यू टॉकिंग टू डिस्ट्रीब्यूटर्स जो बोलेगा मेरे को 30 दिन का क्रेडिट चाहिए, वो आगे रिटेलर को क्रेडिट देगा, वो 30 का 45 दिन का हुआ, 60 दिन का हुआ, पता ही नहीं चलता है, राइट? एंड यू आर सडनली यूर लाइक हाँ ऑफिस तो खोल लिए बट आई डोंट हैव द कैपिटल टू एक्चुअली एक्सपैंड द बिजनेस. हाउ डिड यू डील विद दैट? So I'd say we did a lot of things, Siddharth. We said that okay, firstly we went close to the customer. तो customer को delivery fast मिल रही है. When I traveled, I realized हम लोग को ऐसा लगता है कि हम credit देंगे तो हमारा sales बढ़ जाएगा. And when I traveled, I realized that credit is not the issue for the customer. Customer बोला कि भाई हम आपको एडवांस तो दे देंगे और उसके बाद माल आने में इंदौर से 15 दिन 20 दिन लगेगा, माल टूटा हुआ मिलेगा, तो फिर it demotivates the distributor. So I said, okay, I'll make it a point that you get your goods in maximum 48 hours. So for that, I had to come closer to you. So advance payments हमने first day से किए. So all the new offices which I opened, from the day one I said advance payment. No one knows me. No one knows me in that market. But हाँ, हम माल आपको देंगे, हमको देना है, हम आए हैं आपके पास बिजनेस करने के लिए और पेमेंट तो आपको एडवांस देना पड़ेगा. नहीं, ये तो आप इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो कि आपने कर दिया, बट इट कुडंट हैव बीन दैट इजी. इट कुड हैव बीन दैट इजी, राइट? ये तो सब जूझ रहे हैं इस प्रॉब्लम से कि एडवांस में पेमेंट आ जाए. हाउ डिड यू क्रैक दैट कि एडवांस में पेमेंट करवाया डिस्ट्रीब्यूटर से? स्टार्टेड विद अ स्मॉल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स इन सर्टेन मार्केट. तो न्यू मार्केट्स वी स्टार्टेड. एज आई टोल्ड यू कि नए मार्केट में मिला, वी हैव नथिंग टू लूज देयर. एक ऑफिस खोला, एक बंदा रखा है, अल्टीमेटली उतना नुकसान होगा तो उतना आई कैन अफोर्ड. दैट कैलकुलेटेड रिस्क वर टेकन, तो इतना आई कैन अफोर्ड. लेट्स बट आई विल नॉट डिविएट फ्रॉम एडवांस पेमेंट बिकॉज से फॉर एग्जाम्पल चेन्नई, अभी चेन्नई ऑफिस है, तमिलनाडु में छोटी छोटी जगह है, यू डोंट नो द लैंग्वेज, इतना दूर है, कैसे आप मतलब उनसे डील करोगे? अगर वहाँ पे आपके बेड डेप्स होंगे तो यू बहुत ऐसा कि बहुत रेजिस्टेंस आया कि यार आप नई कंपनी हो, आपको कुछ जानता नहीं है, हाउ यू वांट टू डील ऑन एडवांस पेमेंट. तो वी सेड यस वी विल डील ऑन एडवांस पेमेंट. We gave good prices initially. That's where the customer, yes, the margins were better than the competitors, the prices were better than the competitors. We launched a lot of schemes, so which wooed the customer कि यार ये काफी चीजें दे रहे हैं. The products obviously they used to smell, they used to like the product. कि यार ये product चलेगा. वो तो 10-15 years before that you perfected the product and the packaging and the brand, तो वो तो in place है, उसके बिना तो आप नहीं कर सकते हो. Obviously वो तो चाहिए. तो ये सारी चीजें की, बहुत सारी चीजें की. मैं बोल रहा हूँ एक चीज से कभी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो. बहुत सारी चीजें होनी चाहिए और वो सब सही होनी चाहिए. हाँ, तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो. Especially a bet like this, advance payments, where I mean this is a the whole industry was on credit. Exactly. Today it is on credit. Exactly. FMCG तो अभी भी क्रेडिट पे चलता है, राइट? डिस्ट्रीब्यूटर वो ट्रस्ट है ही नहीं उसको कि यार आज उसको लगता है कि जिस दिन मैंने एडवांस पेमेंट पे किया उस दिन मेरे पास माल गलत आएगा, उस दिन माल लेट आएगा, वो सारी चीज आएगी. सो व्हाट यू आर सेइंग इज यू एड्रेस्ड इट बाय बीइंग क्लोजर टू द कस्टमर, सो द सर्विस वाज मच बेटर. आज ऑर्डर प्लेस किया, कल आपके पास माल पहुंच जाएगा, राइट? एंड that I'm assuming is the
is the key reason why working capital challenges नहीं आए होंगे, right? One of the reasons. Did you take that strategy and also implemented it for your vendors? Because I was talking to a pharma company, and one of the things that they spoke about was because they were paying their vendors in advance, they were able to get really rock solid prices in terms of raw materials. Did you do something on the vendor side to make sure you were getting priority in terms of the raw materials, in terms of everything that you were getting? So for us, we always say that our customer is equal to our supplier, because a good supplier is important. अगर supply नहीं आएंगे तो आप product कैसे manufacture करोगे? So we have always respected our vendors, not advance payments, but we have paid them in the time what the term has been decided, जो भी term decided हो. We have tried our best not to return them any material, honor our commitments. अगर verbally मैंने आपसे कुछ deal कर ली समझो तो I'll honor that. It's not that वो return में नहीं है. तो ना जो एज आई सेड ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी वेंडर्स के साथ भी रखी, ट्रांसपेरेंसी रखी, और 1+1 2 से ही काम किया उनके साथ भी. तो दे इवन आर वेंडर्स आर दे गिव अस प्रायोरिटी टुडे, बिकॉज दे नो दीप को माल दिया तो टाइम पे पेमेंट आ जाएगा. हो सकता है 2 रुपये सस्ता देना पड़े, बट पेमेंट टाइम पे आ जाएगा, माल वापस नहीं होगा, कोई पेमेंट काटेंगे नहीं, 1 रुपया भी नहीं, बिल टू बिल फुल पेमेंट. मतलब अगर 1,02,321 रुपये का इनवॉइस है तो 1,02,321 रुपये ही अकाउंट में आएंगे. एंड द प्रिडिक्टेबिलिटी की जब बोला तब आ जाएंगे, राइट? वो सबसे बड़ा आदमी, आई थिंक मिड साइज बिजनेसेस, स्मॉल साइज बिजनेसेस आधे टाइम तो फोन पे रहते हैं कि यार पेमेंट करवा दो, राइट? आप प्रोक्योरमेंट के साथ फोन पे हो या किसी के साथ फोन पे कि पेमेंट करवा दो. एंड व्हेन एन एंटरप्रेन्योर इज जस्ट फोकस्ड ऑन गेटिंग द पेमेंट्स, वो क्या एक्सपैंड करेगा, क्या स्ट्रैटेजी सोचेगा, कैसे आगे के बारे में सोचेगा, राइट? आई थिंक दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. One more thing which is coming to my mind is one of the supplier told my papa when he यार आपका तो पेमेंट हम लोग ईमेल करते हैं, तो दिस वाज 2005-2006, हम लोग ईमेल करते हैं और आपका पेमेंट आ जाता है. ये तो पहली कंपनी हमने देखी जहाँ हमको फ़ोन नहीं करना पड़ता, हम एक मेल शूट करते हैं, पेमेंट आ जाता है. पापा बोले क्या होता है, आई डोंट नो व्हाट इज द मेल, आप मेल पे क्यों भेजते हो? मतलब नॉर्मली कोई कौन फ़ोन करेगा आपका उस समय पे? तो आई यूज टू सी द मेल्स. देन फ्रॉम डे वन वी मेड श्योर दैट नो वन इज गोइंग टू कॉल अस. मतलब पहले तो मेल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़े, जो डिसाइडेड है, और बाय एनी चांस उसकी ड्यू डेट से लेट हो गया, उसका मेल आया, तो सेम डे वी मेक द पेमेंट इफ देयर इज एनी ईमेल. So he doesn't have to do a follow-up. Forget calling. Calling is like worst. वो तो हाँ, it is not going to happen. I'm not going to tolerate if someone is calling me. तो एक मेल पे पेमेंट हो जाता है. Still today कि ड्यू डेट पे होता है, ड्यू डेट से कभी पता ना करता कोई कारण से overlooked or anything has happened. So if a supplier, which is very very rare, the supplier sends us an email and we send it. This is carrying from 17-18 years. One of the interesting things that you did was new markets में एडवांस पेमेंट किया, तो वो पुशबैक नहीं आया, एग्जिस्टिंग को एडवांस पे शिफ्ट करना, जिसको क्रेडिट दे रहे थे उसको एडवांस पे शिफ्ट करना. That was the tough part. That was very difficult. To change the distributor को बोलना कि भाई तू एडवांस दे दे. You like यार मैं तो आपको टाइम पे ही पे कर रहा हूँ, मैं तो इतने साल से आपसे जुड़ा हुआ हूँ, मैं तो आपके पापा के टाइम से जुड़ा हूँ, मैं तो आपके घर पे खाना खाया है और आप मेरे से एडवांस पेमेंट मांग रहे हो. सो आई सेड कि यस, अभी तो एडवांस पेमेंट ही आपको देना पड़ेगा. एंड दिस इज वेयर वी वर वेरी एडमेंट, वी वर वेरी स्ट्रॉन्ग कि ये तो करना ही है. सो इट वाज अ टफ थिंग टू चेंज ऑल दोज कस्टमर्स, स्पेशली द ओल्ड वंस. यू नो, ओल्ड वंस आर द टफेस्ट वन. ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनके साथ होती है कि दे हैव अ माइंडसेट, दे नो यू, दे कैन कॉल यू एनी टाइम. वो इमोशनल एंगल भी है. या तो बोले यार हमने तो मेहनत करके आपका ब्रांड खड़ा किया, जब कोई पूछता नहीं था तब तो आपने हमको माल दिया, आप हमारे पास आके बैठ के 2 घंटे माल देके गए, अब आप एडवांस पेमेंट मांग रहे हो, आपका माल चलने लग गया. बट आई न्यू दैट, आई थिंक बाय वी स्टार्टेड ऑल दिस ट्रेंड इन 2011 के आसपास, एंड बाय 2015, आई थिंक 2015-16, बिफोर 2016 वी वर 100% एडवांस पेमेंट. Did it impact sales initially? It did impact it, but I was very sure that ये long run में impact नहीं होगी, it is going to give good results. Because what happened is, again a small example, me and Anshul, we used to do this annual trips to all the offices, all the markets, and we used to do a dealers distributors meet there. तो जैसे हमने यूपी में किया, एक हम यूपी की 2 होती थी, ईस्ट की एक वेस्ट की. तो हमने स्टार्ट किया, हम लोग यहाँ से समझो एग्जाम्पल आगरा गए, आगरा में हमने डिस्ट्रीब्यूटर मीट की वेस्ट यूपी की, फिर हम वहाँ से कानपुर गए, कानपुर में हमने डिस्ट्रीब्यूटर मीट की ईस्ट यूपी की. ये दोनों मार्केट्स में क्रेडिट पे थे, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स डिस्ट्रीब्यूटर बताते थे. जब डिस्ट्रीब्यूटर्स का बात करने का टाइम आता था तो ये प्रॉब्लम है सर, ऐसा प्रॉब्लम है, ये माल वापस भेजना पड़ेगा, ऐसे करके. फिर वहाँ से ओवरनाइट की ट्रेन लेके हम लोग पटना गए. पटना वाज अ न्यू मार्केट. वी स्टार्टेड एडवांस फ्रॉम डे वन. 2012 में, आई थिंक 2010 या 11 में डिपो चालू किया, और फर्स्ट डे से एडवांस को ऑल बिहार. तो भाई और लगता है बिहार में तो और डिफिकल्ट है, जाके कैसे पैसे लेके आएंगे. तो चलो एडवांस पेमेंट चालू करते हैं, यहाँ पे नया मार्केट ट्राई करते हैं. तो वहाँ एडवांस पेमेंट चालू किया, वहाँ पहुँचे तो
जब डिस्ट्रीब्यूटर क्वेश्चन आंसर का टाइम आया तो पूछा कि भाई यानी कोई आपको इशू है आप बताएंगे, जब बोले नहीं कुछ भी, फिर 2-3 बार पूछा, कोई कुछ नहीं बोले, एक छोटा मोटी कोई बात की, एंड काफ़ी वी वर सरप्राइज। एंड फिर उसके बाद आई थिंक एक और मार्केट हम आई थिंक कलकत्ता गए थे, कलकत्ता में भी सिमिलर हुआ, वहाँ भी एडवांस पेमेंट था और वहाँ भी आई थिंक ऐसा ही हुआ एपिसोड। देन वी रियलाइज कि बॉस जहाँ एडवांस पेमेंट है वहाँ कोई इशू नहीं है तो ये तो करना ही पड़ेगा। हाँ, तो यस, वन ऑफ द थिंग्स दैट वी वर डिस्कसिंग अर्लियर, एडवांस पेमेंट पे जो मेरे को काउंटर इंट्यूटिव लगा, मुझे लगा था कि ऑब्वियसली एडवांस पेमेंट तो कम मान लेगा, कम बिकेगा, बट क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर एडवांस पे लेता है, दे पुश इट फर्दर बेटर देन दी अदर प्रोडक्ट जो क्रेडिट पे है, करेक्ट? डिड दैट प्ले इन फेवर? yes, absolutely. I think it's perception plays a big role in everything which I'm a firm believer of perception. So अब जैसे ही वो एडवांस पेमेंट में प्रोडक्ट ले रहा है तो उसके दिमाग में प्रीमियम हो गया वो डिस्ट्रीब्यूटर के दिमाग में, तो रिटेलर को भी पुश कर रहा है तो वो भी उसको भी पेमेंट देना है एडवांस, तो रिटेलर को भी बोल रहा है कि भाई जल्दी एक वीक में पेमेंट है, जो पहले शायद 30 दिन में लेता होगा बोल रहा है एक वीक में दे, 10 दिन में दे। तो इट इज़ अ प्रीमियम बॉस, ये पेमेंट ये अगरबत्ती चाहिए तो 1 महीने क्रेडिट पाएगी, ये अगरबत्ती चाहिए तो 7 दिन, क्यों भाई इसका एडवांस पेमेंट देता है, तो वो दैट प्रीमियमनेस इज क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ द कस्टमर कि बॉस ये कंपनी एडवांस पेमेंट में डील करती है। तो आई थिंक दैट ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल कि दैट परसेप्शन ऑफ कि भाई ये तो महंगा प्रोडक्ट, मतलब नॉट महंगा इन कॉस्ट वाइज बट ये समथिंग दिस समथिंग डिफरेंट, समथिंग एक्सपेंसिव, तो यस प्रोबेबली दैट वुड हैव। Interesting. The other interesting thing is uniform pricing across India, right? It is a very, Agarbatti is a very regional business. Brands भी बहुत सारे regional हैं. Pricing differs across different regions. What was the thought process? Uniform क्यों? So as I said that we are firm believers of honesty and transparency. So when we decided this pricing strategy, we said that see India is a big country, and हर 100 kilometers पे बात करने का तरीका, preferences, everything changes. खाना बदल जाता है. सब चीज़, सब बात। हम लोग ट्रेन में बैठ के we went to a अगरबत्ती exhibition in Gujarat in 2014, and there was a Gujarati guy with me from Ratlam. He was coming. Both of us were coming in the train. And अहमदाबाद से हम लोग बैठे तो लोग गुजराती में बात कर रहे हैं, फिर आनंद आया 30 किलोमीटर, तो वहाँ लोग चढ़े, लोकल लोग गुजराती में बात करते, तो मेरे को होता है देख तूने डिफरेंस किया, मैंने क्या डिफरेंस, बोले अहमदाबाद की गुजराती और आनंद की गुजराती में कितना डिफरेंस, ही कुड मेक आउट, ही नोज गुजराती, आई डोंट नो गुजराती, बोले यार ये उसने वर्ड बताया मुझे, आई फॉरगॉट द वर्ड, बट ही सेड दैट कि देख 30 किलो अहमदाबाद आनंद, आई डोंट नो 40-50 किलोमीटर होगा जितना भी, तो सोच इसमें कितना डिफरेंस है इनकी गुजराती की बात करने के तरीके में। So India is such a country. So we said that make such products which can be sold in pan India. अगर ऐसा प्रोडक्ट आप बना सकते हो जो पूरे इंडिया में बिके, तो आप कितना वॉल्यूम कर सकते हो, सच अ बिग कंज्यूमर मार्केट। वो उसी में बहुत इनोवेशन चाहिए, लेकिन वो प्रोडक्ट बनाने में उसका नाम क्या होना चाहिए, उसकी पैकेजिंग क्या होनी चाहिए, वो क्या स्मेल होनी चाहिए, क्योंकि पैन इंडिया चलाना एक प्रोडक्ट को इंडिया में इज वेरी डिफिकल्ट। वो थॉट था, प्लस ये था कि भाई ऐसा प्रोडक्ट अगर पैन इंडिया दे सके तो प्राइसिंग भी सेम रखना है पैन इंडिया, तो रखने से हमारी लाइफ भी बहुत ईजी होती है कि सब जगह सेम है, सेम रेट्स, सेम स्कीम्स, सेम पॉलिसी, तो इट्स ईजियर फॉर अस ऑल्सो। यस, इट वाज डिफिकल्ट व्हेन वी चेंज टू दिस सिस्टम ऑल्सो, बट नाउ वी आर वेरी हैप्पी दैट एवरीथिंग एक कम्युनिकेशन पैन इंडिया चले जाता है, इट्स वेरी ईजी, वरना अलग अलग, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, तो एक कम्युनिकेशन इंग्लिश में और हिंदी में सेम बनाओ, पैन इंडिया चले जाए। बहुत ही कोई रीजनल स्पेसिफिक कभी कोई रिक्वायरमेंट होती है तो फिर उसको लैंग्वेज वाला बना के भेजते। करेक्ट। आई थिंक एज यू सेड, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं दैट इनेबल यू टू स्केल, राइट? Yeah. नहीं तो एज आई सेड 1000 मैन्युफैक्चरर अगरबत्ती के, और ऐसा नहीं है कि अगरबत्ती इटसेल्फ इज रॉकेट साइंस। आई एम श्योर परफ्यूम इज, उसमें बहुत R&D जाता है, बट लोगों ने डिफरेंट क्रैक किए हुए हैं परफ्यूम्स एंड व्हाट वर्क्स, व्हाट डजंट वर्क, बट द ऑपरेशन साइड ऑफ थिंग्स, इफ यू डोंट गेट दोज राइट, यू कांट स्केल दिस बिजनेस बिकॉज इट्स अ वेरी हार्ड बिजनेस, लो प्राइस पॉइंट है, राइट? मार्जिन्स आर नॉट गोइंग टू बी रॉक सॉलिड एकदम से जब डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर अगर, दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। आई वांट टू टच अप अ लिटिल बिट अपॉन एक्सपोर्ट मार्केट। अगरबत्ती जब कोई सोचता है तो लगता नहीं है कि एक्सपोर्ट मार्केट इतना बड़ा होगा जितना आप लोग 41 countries today, right? That's where you're exporting to. Who's buying? Is it Indians living in those countries that are buying? Is there a different market for agarbattis there? कौन खरीद रहा है? So we export to 41 countries, but अगरबत्ती is exported to more than 150 countries. और आप जहाँ जाएंगे आपको अगरबत्ती देखने को मिल जाएगी। कौन खरीद रहा है? मेजरली इंडियंस लिविंग देयर, NRIs। उसके अलावा बुद्धिस्ट कंट्रीज में भी अगरबत्ती का यूज लोग, मेडिटेशन योगा इज अनदर सेगमेंट, मेडिटेशन योगा, लाइफस्टाइल, रूम फ्रेशनर की तरह लोग यूज कर रहे हैं। अफ्रीका में स्पेनिश लोग
बहुत यूज़ करते हैं, लैटिन अमेरिकन्स बहुत यूज़ करते हैं, वो तो फर्म बिलीवर हैं अगरबत्ती के, तो काफ़ी लैटिन अमेरिका इज़ अ बिग मार्केट फॉर अगरबत्तीज। वो भी सरप्राइज्ड कि इंडिया की जो अगरबत्तियाँ हैं जो हम लोग पूरा इंडिया एक्सपोर्ट करता है उसका कोई कंपटीशन नहीं है, वो इंडिया में ही बनती है बस। तो जो फ्रेग्रेंस में हमारा एक्सपर्टीज़ है अगरबत्ती को लेके, तो हमारा कोई भी टचवुड अगरबत्ती चाइना में बनती हैं, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, जापान, बेल्जियम, सब जगह अगरबत्तियाँ बनती, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब जगह अगरबत्तियाँ बनती हैं, मैन्युफैक्चर होती है, श्रीलंका। बट इनके जो प्रोडक्ट्स हैं इंडियन अगरबत्ती को कॉम्पीट नहीं करते बिकॉज ऑफ द फ्रेग्रेंस एंड पैकेजिंग एंड एवरीथिंग, जो हम लोग यूनिकनेस है, जो हमारी एक्सपर्टीज़ है इंडियंस की उसमें। और गवर्नमेंट के लिए भी बड़ा अच्छा फॉरेन एक्सचेंज का प्रोडक्ट है ये अगरबत्ती। बहुत सारी पहले आज भी गवर्नमेंट स्पेशल हमको इंसेंटिव्स देती है फॉर एक्सपोर्ट्स। I was reading, I think 15-20% year-on-year growth हो रहा है, especially after COVID. Export market itself is now 1,500 crores, I think, and growing. तो interesting. अंकित, अभी तक हम लोगों ने distribution की बात करी and how you set up that distribution. But in order to match the demand that comes from being pan-India, having these distributors is the manufacturing side of things. You've always been a manufacturer first, right? And scaling the manufacturing side of things to now 10 lakh square feet of manufacturing capacity that you have today. How did that come about? Because इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, लेबर का प्रॉब्लम आता है, कैपिटल का प्रॉब्लम आता है कि यार इतना बड़ा कैपेक्स करना है, वो कहाँ से आएगा, स्पेशली व्हेन यू आर बूटस्ट्रैप्ड. How did the manufacturing expansion happen? What were some of the learnings that happened in that period? So obviously, as you said, that we are a manufacturing company first, and manufacturing के बिना तो product आप दे नहीं सकते, is still majorly made by hands only, and there is a lot of it might look like a simple agarbatti or a box of agarbatti. There are many processes which goes into manufacturing of agarbatti. So different stages हैं. That is outsourced by the manufacturers, but that we make. तो उसका प्रोसेस है, उसमें मशीन का इन्वॉल्वमेंट है, बैम्बू के ऊपर मसाला आना, फिर उसके बाद उसको फ्रेग्रेंसिंग करते हैं, फिर काउंटिंग या वेइंग होती है, फिर पैकिंग में पैक होता है, फिर बॉक्स में पैक होता है, फिर आउटर में फिर शिपर कार्टर्स में पैक होता है. तो डिफरेंट प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व्ड. तो मैकेनाइजेशन कुछ जगह है, कुछ जगह मशीन्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ, जैसे रॉबत्ती बनाने में जिसमें मशीन बैम्बू के ऊपर मसाला हम लोग लगा रहे हैं, या फिर इनर पैकिंग्स में पैक करने का मैकेनाइजेशन आया है. तो ऐसे 2-3 स्टेज हैं बीच में जहाँ मैकेनाइजेशन आया है, बट मेजरली आज भी हैंड से ही पैक होती है. एंड वी आर लकी टू हैव सो मेनी वर्कर्स. वी हैव अराउंड 3500 वर्कर्स, 80% ऑफ विच आर अनस्किल्ड फीमेल वर्कर्स. वी आर वेरी प्राउड एंड हैप्पी टू हैव देम विद अस. देयर आर फीमेल्स विच यूज्ड टू वर्क एट आवर हाउस व्हेन जब घर पे हमारी अगरबत्ती की फैक्ट्री थी 91 to 96, 97. वो आज भी आती है, हमारे साथ ही काम कर रही. They travel from 20 odd kilometers one way to work in our factory. So we are lucky to have such people who are working with us. तो इनको streamline किया हम लोगों ने. We in the Jan Dhan Yojana, we got their bank account open. We removed the middleman. We directly pay them. So one of the bigger things is that we pay them directly. नहीं तो contractors होते हैं generally. हाँ, तो we don't engage. So पापा ने ये भी किया. आप देखो हर जगह से, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में हमने खुद के ऑफिस खोले, खुद के ऑफिस खोले, बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया. जहाँ जहाँ पॉसिबल हुआ भी लेसन द मिडल मैन इफेक्ट. तो वर्क स्पेशली वर्कर्स में इट्स ऑल ऑन, दे आर ऑल ऑन आवर पेरोल. तो जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तब उनको बड़ी प्रॉब्लम हुई, बट बैंक अकाउंट्स खुलवा के बैंक अकाउंट में हम लोगों ने पैसे दिए. तो इट वाज वेरी गुड फॉर देम दैट दे रिसीव मनी डायरेक्टली. स्पेशली कोविड टाइम पे बहुत हेल्प हुई जब फैक्ट्रियाँ बंद थी एंड दे डिडंट हैड एनी सोर्स. तो घर चलाना भी मुश्किल हो रहा था, तो डायरेक्ट उनके सबके बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए. उस टाइम पे एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टर तो ये कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दिया तो वो तो जाना ही नहीं आगे. कोई चांस ही नहीं है वो आगे जाने वाला है. जब बाई यूपीआई और ये सब आ चुका था तो उनको भी मिलता था. दे वर आल्सो हैप्पी कि फटाफट उनको भी कुछ खरीदना है, तो उन्होंने यूपीआई किया और खरीद लिया. तो ये चीज़ों ने बहुत हेल्प किया कि मतलब आज भी द वर्कर्स आर वेरी हैप्पी दैट उनके बैंक में डायरेक्टली पैसे आते हैं. तो दिस सिस्टम वी हैड क्रिएटेड दैट ऑल आवर वर्कर्स आर डायरेक्टली लिंक्ड टू अस. दे हैव बैंक अकाउंट, द मनी गोज डायरेक्टली इनटू बैंक. दे आर एट मर्सी ऑफ नो वन बेसिकली. इंडिपेंडेंट, दे आर वेरी इंडिपेंडेंट. और फीमेल्स स्पेशली, यू सी फीमेल्स तो Yeah. वो तो बहुत मतलब फूड चेन में समवेयर इन द लास्ट द अनस्किल्ड फीमेल लेबर्स. बट दे हैव दिस सेंस ऑफ यू नो दैट मेरा बैंक अकाउंट है, मेरे आई एम अर्निंग, इट्स कमिंग इन माय बैंक अकाउंट, मेरे नाम से आता है. सो And I mean, it's the sad state of affairs, but in that part of society, domestic abuse is also very, very prevalent. But when a woman is independent,
she can stand up to it, right? Versus Absolutely. not having that identity, not having that financial independence. Absolutely. Now comes the important part of celebrity marketing, right? 2016-17 तक आपने scale distribution में भी figure out कर ली है, एक तरीके से manufacturing में भी figure out कर ली है. But एक brand बनाना, you need somebody to back it up, right? And Dhoni is the first, the first brand ambassador that you had back in 2017. Yeah. What was the thought process, especially as a family business, because celebrity marketing is not cheap at all. It's the cost of the getting the celebrity, then cost of running those ads at the right points. What was the thought process? क्यों करना था? क्या stage, क्या थोड़ा सा उस time पे लेके जाओ, क्या business की, उस time पे क्या stage थी, and how did Dhoni change it? So business was obviously good at that time. हम लोग almost advanced payment systems. We were expecting the GST era was going to come in from July. Demonetization had just finished, and the business was still growing because we had our systems in place. I actually have a question there. GST era, in my previous job, I used to work with a lot of manufacturers, and I have an interesting story. मैं एक manufacturer से मिला था, paper manufacturer, जो 2012, 2013, even 2014-15 तक, they were struggling. And they were struggling because they used to do everything by the book, everything by system. And when you do everything by system, तो आप tax कुछ नहीं कर सकते, आप black में कुछ नहीं कर सकते. But जो competition था, वो सब कुछ off books था, right? So they were able to supply products at a price point that was cheaper than the manufacturing cost of this person because he was doing everything by the book. And I spoke to him in 2019 something, and he said my life changed when demonetization and GST happened, right? Because the entire unorganized market couldn't understand how to deal with this, and it almost felt like we were preparing for this all our lives. Did a similar moment happen to you? Because this is also an unorganized heavy market in that sense. So being prepared for with systems already before GST and demonetization came in, did it help? No, definitely it helped in, एक जैसा pan India एक जैसा tax हो गया तो obviously the things became easy. But इंडस्ट्री में शेकअप हुआ? इंडस्ट्री में ऐसा taxation को लेके इतना issue नहीं था because GST के पहले अगरबत्ती didn't used to attract any tax. Oh, interesting. So it was never an issue. यानी जब GST आया तो सब लोग 5% सेम ब्रैकेट में आए, कोई डिफरेंस नहीं रहा किसी में. तो ऐसा टैक्सेशन के पार्ट से लकीली हमारी इंडस्ट्री को कभी कोई इशू रहा नहीं. Interesting. तो that was never an issue. Yeah. Coming back to Dhoni, 2016. So Dhoni, see, I was always amazed by the celebrities. I say that okay, they can. I mean, they are influencers. They are big time influencers. And I always used to say that मेरा बजट अगर 100 रुपये है तो कोई MNC का बजट 10,000 रुपये है. तो मुझे जो 100 रुपये में जो वो 10,000 रुपये में इम्पैक्ट डाल रहा है मुझे 100 रुपये में इम्पैक्ट डालना है. तो जब तक मैं ऐसा फेस नहीं लेके आऊँगा जिसकी बात लोग सुनेंगे, जिसको पलट के लोग देखेंगे, तब तक वो इम्पैक्ट नहीं बनाएगा. So I always thought that I should get a celebrity and I should do justice with my budgets, my kind of budgets which I want to spend, which are very less obviously in front. See, you are in a small industry. It's not issue of the general market. It's your own issue. तो आप छोटी इंडस्ट्री में, आपकी इंडस्ट्री छोटी है, आपके एक्सपेंसेस छोटे हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, तो ये आपका इशू है. बट आप जब मार्केट में आते हो तो यू आर एनी अदर FMCG प्रोडक्ट, सो यू हैव टू बिहेव लाइक वन. तो हम बोले कि यार कैसे करेंगे यार ये. तो अच्छा कोई ऐसा व्यक्ति लो जिसकी बात सब लोग सुने. तो किसकी बात सुनेंगे? अभी एक लेना है, पैन इंडिया लेना है. तो यार इंडिया इज ड्रिवन बाय 2 थिंग्स, क्रिकेट एंड बॉलीवुड. तो अभी पैन इंडिया बॉलीवुड सेलिब्रिटीज साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया में पीपल नो देम, दे लव देम, दे आर फैन. बट क्रेजी, आई डोंट थिंक कि क्रेजी किसी के लिए, वहाँ लोकल स्टार्स बहुत हैं, वो इन्फ्लुएंस ऑन एलिमेंट उतना स्ट्रांग जानते हैं सबको जानते हैं. तो वी सेड ओके सो लेट्स टेक अ क्रिकेटर. तो क्रिकेटर में कौन? तो उस समय भी 2 ही थे, धोनी और कोहली. लाइक यार कोहली वाज लाइक कि यार धोनी की मूवी जस्ट आई थी उस टाइम. तो और सबको पता है कि इसने बहुत नीचे से रेस किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है, एज अ फर्म बिलीवर ऑफ गॉड है, गॉड फियरिंग है, फैमिली है, टचवुड कोई कंट्रोवर्सी नहीं है. सो ही वाज अ परफेक्ट मैन फॉर अस. वी सेड कि ओके दिस एवरीवन नोज एंड he's achieved a lot. See, 2011 World Cup, 2013 Champions Trophy, 2007 making India number 1 in Test cricket. So he's done a lot of things. So we said that he's a perfect guy for us, and we approached him. Luckily, the thing happened. He agreed, and that's how he came on board. So it's very hard to go wrong with Dhoni, at least at that point in time, जो जिस तरीके से वो पीक पे थे. But how do you justify as a business owner, how do you justify the cost outlay? क्योंकि ये
इट्स नॉट वन ऑफ दोज मार्केटिंग जो आपको डायरेक्टली आप देख सकते हो इसकी ROI क्या होगी, राइट? बट उस टाइम पे थोड़ा भी डाउट था कि यार ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग इट्स अ सिग्निफिकेंट आउटले व्हाटएवर सेड एंड डन. नहीं, मुझे तो कभी डाउट नहीं था. आई वॉज एडवांस पेमेंट्स तो दोनों दो चीज़ों को लेकर आई वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड कि तो करना ही है. मुझे कभी भी डाउट नहीं था. पर यस, यू व्हेन यू यूज्ड टू टॉक पीपल, व्हेन यू यूज्ड टू टेक एडवाइस, तो कभी कभी डाउट आता था. बट ऐसे मतलब आई नॉर्मली यही क्या एक कान से उनको दूसरे कान से निकाल दिया कि हमको तो ये करना ही है. वो डिसाइडेड था कि करना है और लकी अच्छा हुआ, मतलब किया तो इट गेव गुड रिजल्ट्स. सो आई थिंक इट्स the way you understand your business, no one does. I think if you are very deeply involved in your work and you go by your gut, I don't think it can go wrong. I have a deeper question here, right? Both of you are technically first time entrepreneurs. ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसी जगह काम किया था जहाँ पर ये आपने जर्नी देखी है. पहली जर्नी है आप लोगों के लिए. And as you said, you spoke to people. How do you balance as an entrepreneur who's doing this day in day out? As you said, तुमसे ज़्यादा पता नहीं है किसी को. But how do you balance इंडस्ट्री वेटरन्स या किसी से एडवाइस लेना, पीपल हु बीन दैट डन दैट, वर्सेस ये मुझे करना है और ये सही चीज़ लग रही है, राइट? ये बैलेंस कैसे करते हो? So I think rather than seeking advice, we should seek for experiences. We should ask the veterans to share their experience. इंडिया में अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाता है कि आप किसी से बात करने जाओ और वो शायद एक्सपीरियंस से चालू के एडवाइस पे एंड होता है. तो आई फील दैट एक्सपीरियंस आपको टेक करना चाहिए सामने वाले का. And then, as I said, that you are the right person. आप with all due respect, कितने consultants आ जाएं, कितने आपके advisors आ जाएं, कोई भी आ जाए, आप जो आपके business के बारे में सोचते, जो जितना आप उसको समझते हो और कोई नहीं समझता, तो day in day out you are being in that business. तो आप दूसरों के experience से सीख सकते हो, आप उनसे समझ सकते हो, बट एट द एंड उस सबको मिला जुला के आपके गट से डिसीजन लेना चाहिए. दैट व्हाट वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट एक्सपीरियंसेस वर्सेस एडवाइस. एडवाइस में ये भी होता है कि सामने वाले ने अगर एडवाइस दे दी और आपने फिर कुछ जाके अलग किया, दैट ऑल्सो पिंचेस. मैंने तो बोला था, मैंने तुमको कहा ही था. एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक समबडी स्टिक टू एक्सपीरियंसेस. मेरे को एडवाइस मत दो, मेरे को एंड रिजल्ट मत बताओ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. आपके टाइम पे व्हेन यू डिड दिस, व्हाट वाज द रिजल्ट, ऑल ऑफ दिस. दैट एक्सपीरियंसेस कैन नॉट गो रॉन्ग. हाँ, हिस्ट्री में जो हुआ है इट कैन नॉट गो रॉन्ग. तो आप एक्सपीरियंस, हाँ, उससे आप सीख सकते हो. बट एडवाइस आई थिंक वहाँ ओपिनियन आ जाता है, वहाँ बायस आ जाता है. आई रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू गिव एडवाइस टू एनीवन. आई कोई मुझसे पूछा था ऐसे, आई हैव अ रेलेवेंट एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस, आई विल शेयर इट. अदरवाइज आई से यू कैन ट्राई, आई डोंट नो. Interesting. Now, having Dhoni come and advertise for Z Black, that put Z Black as a brand. Yeah. Right. Since then, you've also expanded the product portfolio significantly, right? Yeah. Not within the agarbatti segment, within the the religious product segment. There are dhoops, there are samagri, there are a bunch of different things that you do. But beyond that, also you've entered into FMCG, papad, soya chunks, confectionery. Strategy, thoda sa samjhao. What's the logic behind? Because all of these things take a certain amount of outlay, capital outlay to establish these things. Wo kya tha? What was the thought process there? See, I joined very early. My brother also, both of us joined very early. And I'm 37, he's 35. Age is still by our side. So we feel that you want to do something new. कुछ तो करना है. वो तो अंदर है ही सही कि स्पार्क तो रहता है कि कुछ नया करना है, कुछ डिफरेंट करना है. But over the time we realize that जो existing synergies हैं, उनको जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, उतना बेटर रहेगा. अदर देन आज मेरा FMCG बिजनेस है, तो या तो मैं कुछ बैकवर्ड इंटीग्रेट करूँ या फॉरवर्ड करूँ. तो उसमें मुझे क्या है कि एग्जिस्टिंग चीज़ों की हेल्प मिल जाएगी. अदर देन मैं समझो कि कोई एंटायर नई चीज़ करता हूँ, समझो मैं IT में चले गया, रियल एस्टेट में चले गया, जब मैं किसी को जानता नहीं हूँ, मेरा कोई टेक्निकल नॉलेज नो हाउ नहीं है. तो अब आपने जो प्रोडक्ट्स किए मेंशन कि द फूड प्रोडक्ट्स, सो दे आर ऑल्सो FMCG प्रोडक्ट्स. So at least we can exploit our own mission channel for that. We can tell them ki try, and they know कि boss, this company is okay, if there is any fault they'll take the material back. और उसमें भी एडवांस पेमेंट दे रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स में भी सब में एडवांस, तो दे नो कि देयर पेमेंट इज सिक्योर्ड. तो एक कस्टमर साइड से एक रिलीफ रहता है कि वो है. फिर आपकी मेहनत, आपके प्रोडक्ट की किस्मत, क्वालिटी, रेट, एवरीथिंग मैटर्स एट द एंड. So that's why we ventured into this. Especially my father, when me and my brother, we took the full control of business in 2017. He said that now since you both have taken the control, there's not much left for me in this.
And at my age, when the children take over, the people retire and they take a back seat or they get engaged themselves in dharam, dhyan or whatever. He's a very God-fearing person. But वो बोले कि what drives me is business, is being an entrepreneur. So I want to do something. So he started this food business entire. So at the age of what 55, 56, he started this new business. And then with a family friend, we started this confectionery business where they also wanted to come into FMCG business. This is how all these things. New products came about. But your focus still remains that agarbatti and the extensions of that dhoop, and especially into the Z Black brand. I think Bread and butter. Bread and butter है वो website पे जाओ या कहीं भी जाओ, that's the front and center. What I found interesting was when I was connecting the dots कि ये product lines कैसे चालू हो रही है, I realized fragrance is the key element on how these product lines are being, Most of the things. right? Yeah. Fragrance, because you've invested in R&D already in terms of fragrance. Now how do you expand that portfolio beyond that? Absolutely. Okay. Ankit, a few more, slightly more personal questions. Sure. Now, you've been in the business about 17 years now, 15, 17 years. 19 years. 19 years now, technically. Yeah, 2003 Yeah, maybe. yeah. What we've discussed so far and where you're sitting today, obviously things have turned out fantastically well. But it wouldn't have been that along the way, right? Were there moments where you were just completely confused about where is this heading? Are we doing the right thing? Are we in the right place? What were the lowest moments of this entire journey for you? Since you've asked, so deodorant business I started in 2014. Invested a lot of time, efforts, money in that, and that failed. So it was a low for me. That being in fragrance, I took the best fragrances, I did the best thing possible, but it failed. A lot of learnings came out of it. But Right. so Learnings without deodorant business feeling, because as you said, product was probably on point because the fragrances were on point, right? Different kind of marketing, different kind of distribution. yeah, so we are used as a company, as individuals, we are used to sell a 10 rupee product. It was a 200 rupee product. We are used to sell a family product. It was a personal product. And because उसमें response नहीं आ रहा था, time मतलब, and I later realized I was using Dio myself at that point of time. तो मैंने यार ये bottle तो खत्म ही नहीं होती है. If you use Dio, it will get finished in 4-5 months. Even though those space दिन में एक बार करे. तो मैंने देखा कि जो यंगस्टर्स हैं, जो कॉलेज जाते हैं, जो मेन कस्टमर है डिओड्रेंट का, ये 4-5 बॉटल खरीदते हैं, अलग अलग फ्रेग्रेंसेस रखते हैं, इनकी खत्म होने में बहुत टाइम लगता है, इनको वापस आने में बहुत टाइम लगता है. तो कस्टमर डिडंट यूज टू कम सो फास्ट एंड वी मेड मेनी चेंजेस व्हिच वर नॉट इन आवर फेवर. सो प्रोबेबली दैट्स व्हाई वी फेल्ड. एंड मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 200 रुपये का प्रोडक्ट है, उसकी मार्केटिंग अलग तरीके से होनी चाहिए थी, और हमने 10 रुपये के प्रोडक्ट की तरह उसकी मार्केटिंग की. लॉट ऑफ अदर लर्निंग्स आल्सो केम आउट व्हिच लेटर अब नए बिजनेस जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें समझ के करते हैं. Right. But once you have a bread and butter, as long as you're taking calculated risks, as long as you're not putting everything on the line, you can absorb these lessons, you can absorb these losses, you can absorb and get lessons from it that can get applied to. Absolutely. Right. And one of the interesting things that I saw when I was reading about Z Black is most of what you earn through the business goes back into building this business. It doesn't go into real estate investments. It doesn't go into a third business that has no relation to what you guys are doing. And that has been a decision since the very beginning. Yeah, very very focused on that. मतलब वो उसमें तो कोई if and but ही नहीं है. डाइवर्जन ऑफ फंड्स तो इम्पॉसिबल है कि कर दो. मेजोरिटी जो बिजनेस में जरूरत होती है पहले वहाँ होता है, फिर कुछ बचता है तो फिर अदर इन्वेस्टमेंट करते हैं. Right. But that's at the personal capacity. That's not from a business house perspective. Business house is investing back into. Yes, absolutely. Interesting. Perfect. Ankit, this was a fantastic conversation. It's been a fantastic journey and I think a lot of our listeners will learn from it. Manufacturing business को इंडिया में bootstrap करके इतना बड़ा बनाना profitably is not something. अभी तो आजकल profitability तो है ही नहीं, picture में ही नहीं है. It is about raising capital and spending that capital. But what you've done, a pan-India presence, a profitable business, employing 3,500 women, or 80% of them are women. Commendable job. Thank you so much for taking time out, and thank you so much for sharing your journey. Thank you, Siddharth, for this. I would say you did a great homework. Everything was bang on point. Thank you for this podcast. Really loved it. Loved talking to you. Great questions. Thank you.